Hello everyone, this is chapter number 4 of standard 9 algebra, ratio and proportion. I am going to take some important questions of ratio and proportion in this video. This is the first most important question where we are going to use the properties of ratio, that is we are going to use componendo, we are going to use dividendo, componendo, dividendo, everything, okay. A upon B is equal to 7 upon 3. The ratio of two variables need to be given. If we have the ratio of two variables, then we can start finding whatever is to be found out. So these four things are to be found out. These four things are to be found out with the help of this ratio, that is A upon B is equal to 7 upon 3. The first step is squares or cubes. The second step is number. And the third step is the formula. The first step is squares or cubes. The second step is number. The third step is formula. Only 3 steps we can get all these answers. Out of these 4 questions, the 2 questions, that is the first one and the last one, these 2 are very simple. Why? Because these 2 questions does not contain a square or a cube. Raised to 1 hai na? So it does not contain a square or a cube. That means these questions are very simple. So I am going to solve first these 2 questions, then we'll go further. So first let us start with A upon B is equal to 7 upon 3. My first step is check whether squares or cubes. तो क्या square है cube है? No. It is A raised to 1, B raised to 1. Square cube नहीं है. So the first step gets cancelled. Second step is number. Check the number. What is the number besides A? What is the coefficient of A? A के बाजू में क्या नंबर है? 5. B के बाजू में क्या नंबर है? 3. देखो ना क्वेश्चन में देखो ना, A के बाजू में 5, B के बाजू में 3. So A का coefficient is 5, B coefficient is 3. So you must multiply both sides by 5 upon 3. Why 5 upon 3? Because A के बाजू में 5, B के बाजू में 3. Is it clear? First step is check squares or cubes. नहीं है. Go ahead, skip the step. Number is 5 and 3 multiplied by 5 upon 3. So I'll get 5 upon 3 multiplied by A upon B. 5 upon 3 multiplied by 7 upon 3. 5 into A, 5A. 3 into B, 3B, 5 7s are 35, 3 3s is 9. Okay, next step is number. Next step is the formula. Check the sign. Formula in the sense, check the sign and then apply the formula. Check the sign. What is the sign? ऊपर plus, नीचे minus. Plus means componendo, minus means dividendo, and both the signs are given, plus and minus. That means componendo, dividendo. That means componendo. So I will write by componendo dividendo. I will get 5A plus 3B, 5A minus 3B. Same applies on the right hand side. 39 plus 9, 35 plus 9, 35 minus 9. 35 plus 9 is 44. And 35 minus 9 is 26. 2 22s are 2 13s. The answer will be 22 upon 13. Is this clear? Okay. Clear? So this is the first question. I have solved the first one. Now the second one. I am solving this first because this is simple. Next is once again start with A upon B, 7 upon 3. Always start with the ratio of two variables. उसके अलावा स्टार्ट नहीं होगा. A upon B. Now once again, what is the first step? Square or cube? है क्या square cube? नहीं. Second step, what is the number? A के बाजू में क्या है? 7. B के बाजू में क्या है? 9. Very simple. Multiply both the side by 7 upon 9. Multiply both the side by 7 upon 9. Multiply both sides by 7 upon 9. So 7 upon 9 into A upon B, 7 upon 9 into 7 upon 3. I will get 7A upon 9B is equal to 7 7s are 49, 9 3s are 27. Is this clear? Okay.
So this is my second step. Next step is check the sign and use the formula. What is the sign? Plus and minus. So when it is plus and minus, so we have both. Very good. So I'll write by componendo dividendo. In exam you have to write the full spelling. 7a plus 9b upon 7a minus 9b is equal to 49 plus 27. 49 minus 27, that is equal to 76 upon 22. Okay, so 2 11s are, 2 3s are, 2 8s are. Answer will be 38 upon 11. Is it clear? Yes. Clear? Okay. Now the second sum is over. Now the third one. We'll solve this first now. So start with the ratio of two variables. A upon b, 7 upon 3. First check. Square के cube है. Square है. 2a square, b square, square है. So what to do? Squaring both the sides. So you square the sides, you get a square, b square, 49, 9. Is it clear? 7 का square 49, 3 का square is 9. Squaring हो गया. Next step is number. What is the number? A के बाजू में 3 2 है and B के बाजू में 3 है. So multiplying. Very good. By 2 upon 3. So 2 upon 3 into A square upon B square. 2 upon 3 into 49 upon 9. बराबर है? So we will get 2 into A square, 2A square upon 3B square is equal to 2 49 is 98, 3 9 is 27. Okay. Now the third step is check the sign and use the formula. What is the sign? Plus and minus. So by what? Componendo dividendo. Very good. 2a square plus 3b square. 2a square minus 3b square is equal to 98 plus 27 upon 98 minus 27 will become 98 plus 27 will become 108, 118, 125 upon 98 minus 27 will become 71. Okay. Third question is also. Fourth question. Start with this. Always start with this. A upon B, 7 upon B. First step. Square है क्या cube है? Easy. अभी easy लगने लग जाएगा. Cubing both the sides. Very good. Cubing both the sides will become a cube, b cube, 343 upon 27. 343 upon 27. 7 to 7 is 7, 343. Now, 3 into 3 into 3 is 27. Okay. Next is number. What is a number? No numbers are there. No numbers are there, na? There's only one. So already it is one. Numbers की ज़रूरत ही नहीं है. The second step is also skipped. Next, third step. Formula. What is the formula now? Minus. Only minus. Only minus means? Dividendo. Very good. I'll write by what? Dividendo. So a cube minus b cube upon b cube is 343 minus 27 upon 27. So 343 minus 20. 323 minus 7 is 316 upon 27. Okay. Is this clear? So I have got all the 4 answers by a simple method, that is first step square cube, second step number, third step is sign and formula. Okay. Always start with the ratio of two variables. A upon B से ही start करने का, X upon Y से ही start करने का, M upon N से ही start करने का. अगर नहीं है, वैसा नहीं है, so you find out the first find out the ratio of two variables and then use these steps and you will get the answer. So this is easy trick to solve this component dividendo question. Okay. Start. This is 4.3 question number 2. One more important question of componendo and dividendo is this type of question. The first one which we had solved, in that question directly the value of A upon B was given to us. But in this question they have not given the value of A upon B directly. They have given this ratio and we are supposed to find first A upon B. Then tick tick tick. अरे समझ में आ रहा है क्या? See, you cannot get all these answers unless and until you get the value of A upon B. अगर A upon B नहीं मिलेगा तो तुमको ये values नहीं मिलेंगे. So first step is use this and get the value of A upon B. Then use our 3 steps. First step is
square and cube, second step is number, third step is sign and formula. बराबर ना? So first thing is getting the value of a upon b. अरे समझ में आया क्या? So first let us start to get the value of a upon b. चलो क्वेश्चन में ऊपर प्लस नीचे माइनस दिया है. अगर ऊपर प्लस नीचे माइनस दिया है, so I will be using componendo and dividendo. Very good. But it is not that simple कि बाबा बोल दिया यूज कर दिया, इजी नहीं है. I will write by componendo dividendo. Okay. Numerator plus denominator, numerator minus denominator. Done. 47 plus 7, 47 minus 7. ये साइड का तो बहुत इजी था, बट ये साइड का 15a square plus 4b square plus 15a square minus 4b square. 15a square plus 4b square minus 15a square minus 4b square. Purposely I have written the terms in bracket. Why in bracket? Because when you subtract, then the signs will change. If you don't put the brackets, then you will get a wrong answer. समझ में आ रहा है क्या? Without putting brackets also I can get the answer, but for understanding I have written the terms in bracket because there are two terms. Okay. Now I'll open the brackets. 15a square plus 4b square plus 15a square minus 4b square upon 15a square plus 4b square minus 15a square and plus 4b square will become 47 plus 7 will become 54 and 47 minus 7 will become 40. Is this clear? Now in the numerator some terms will get cancelled. 4 and 4. Here 15 and 15 will get cancelled. So ऊपर बचेगा 15 plus 15 30 a square. 4 plus 4 8b square is 54 upon 40. So a square upon b square is equal to 54 upon 40 into ये नीचू तो इधर ये ऊंचू तो इधर नीचू. Is this clear? Okay ना? 8 ones are 8, 5s are 3 और 6 5s are 6 9s are 6 से डायरेक्टली चले गया. So a square upon b square is equal to 9 upon 25. Taking square root a upon b is equal to 3 upon 5. Is this clear? Yes. See, I told you na that if you want to get all these answers, you need the ratio of two variables, and the sum always starts with the ratio of two variables. अब b sum start होएगा, a upon b पहले मिलता है, फिर sum start होता है. समझ में आ गया? चलो अब ये अपने तीन स्टेप. पहला स्टेप स्क्वायर क्यूब, सेकेंड स्टेप नंबर, थर्ड स्टेप साइन एंड फॉर्मूला. ओके चलो पहला स्टेप. फर्स्ट आई फाइंड दिस a upon b is equal to 3 upon 5. I'll find this. स्क्वायर है क्या क्यूब है? कुछ नहीं है. नंबर क्या है? 7 and 3. So a के पास क्या है? 7. b के पास क्या है? 3. Multiplying both the side by 7 upon 3. So multiplying both sides by 7 upon 3. So you will get 7 upon 3 into a upon b, 7 upon 3 into 3 upon 5. 3 will get cancelled. 7a upon 3b, 7 upon 5. Next step is sign and formula. What is the sign and what is the formula? Sign is plus minus. Actually it is minus plus. So actually it is dividendo componendo. But ऐसा कोई formula नहीं है dividendo componendo. There is only componendo, there is only dividendo, there is component dividendo, there is alternando, there is invertendo. ये 5 formula ही है. So dividendo componendo करके कोई formula नहीं है. Componendo dividendo करने का और उसको उल्टा कर देने का. ऐसा बता दो. I'll write by componendo dividendo 7a plus 3b, 7a minus 3b, 7 plus 5, 7 minus 5. So 7a plus 3b, 7a minus 3b is equal to 12 upon 2. 12 upon 2. So 2 ones are 2, 2 6 are.
अब उसको उल्टा कर दो, बाय इनवर्टेंडो। तो 7a माइनस 3b 7a प्लस 3b इज इक्वल टू 1/6। ओके, समझा क्या? मांगता था माइनस प्लस, एक्चुअली आता है प्लस माइनस, उल्टा कर दो। अरे बराबर है ना? जैसे कि देखो ना, अभी ये हो गया, इसमें भी देखो ना माइनस प्लस चाहिए, इन्वर्टेंडो। इसमें भी देखो ना इन्वर्टेंडो। हाँ, पहले कमोडिटी फिर इन्वर्टेंडो। ऐसा समझ में आ रहा है? आगे चलते, चलो नेक्स्ट सेकंड करते हैं। a अपॉन b 3/5, a अपॉन b 3/5। लेकिन एक गड़बड़ है ये वाले सम में। हाँ, एक गड़बड़ है इधर। नहीं, एक ही नंबर का प्रॉब्लम नहीं है इधर, b और a है, a और b नहीं है। नहीं, सी नॉर्मली हम लोग क्या आंसर लाते हैं? a और b, a पहले b बाद में लाते हैं ना, a पहले b बाद में लाते हैं। बट यहाँ पे क्या है, पहले b और बाद में a है, तो उसको पहले b चाहिए, तो उल्टा कर दो, बाय इन्वर्टेंडो कर दो, बाय इन्वर्टेंडो कर दो। यू विल गेट b अपॉन a 5/3। अभी b पहले आएगा, समझा क्या? आंसर में क्या देख चाहिए वो देख लो, b a चाहिए तो b को ऊपर कर दो। फिर पहला चेक करो, स्क्वायर है क्या क्यूब है? स्क्वायर है, ओके। स्क्वायरिंग बोथ साइड। हाँ बोलो, b स्क्वायर a स्क्वायर 25 9। फिर बोलो नंबर क्या है? इधर 1 है और इधर 2 है, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स by 1/2। So 1/2 into b square upon a square, 1/2 into 25/9। So b square upon 2a square is equal to 25/9 2 सा 18। बराबर है? फिर स्क्वायर है क्या? सॉरी, साइन एंड फॉर्मूला। साइन क्या है? माइनस प्लस, बाय कॉम्पोनेंट डिपेंडेंट, b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर upon b square minus 2a square 25 plus 18 25 minus 18 is equal to 25 plus 18 will be 35 43 and 25 minus 18 will be 5 7। अरे बराबर है, बट प्लस माइनस चाहिए क्या उल्टा चाहिए? तो क्या करो? इन्वर्टेंडो b square minus 2a square b square plus 2a square is equal to 7/40। क्लियर? इजी अभी लगना ही चाहिए। और मेरे हिसाब से 2 सम में ही कॉम्पिटिटिव वाले सम्स खत्म होने चाहिए, 2 ही सम में। एग्जाम के लिए भी 2 ही सम प्रैक्टिस करके अच्छे से जाओ बस, और कुछ मत करो सम ये वाले। ऐसे और भी बहुत सारे हैं, बट ये टाइप वाले 2 ही सम करके जाओ, ये और ये बस, और कुछ मत करो। ओके, आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वापस से स्टार्ट कहां से करते हैं? a अपॉन b 3/5। चलो उधर देखो, ये भी हो गया। क्या चाहिए? पहले b और a बाद में a चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? बाय इन्वर्टेंडो आई विल गेट b अपॉन a 5/3। अरे बराबर। नेक्स्ट स्टेप, क्यूबिंग बोथ द साइड। स्क्वायर है क्या क्यूब है? नेक्स्ट स्टेप क्यूबिंग बोथ साइड्स। वी विल गेट b क्यूब a क्यूब 125 27। अरे बराबर। नेक्स्ट स्टेप, नंबर क्या है? वापस से 1 और 2 ही है, b के पास 1 है और a के पास क्या है? 2। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1/2। 1/2 into b cube 1 a cube 1/2 into 125/27। So b cube upon 2a cube is equal to 125/40। Sorry, 54। Next step, sin formula by component b cube plus 2a cube upon b cube minus 2a cube is equal to 125 plus 54 upon 125 minus 54। 125 plus 54 करेंगे तो कितना आएगा? 179। और 120 minus 54 करेंगे तो आएगा 71। बराबर ना? अब बाय इन्वर्टेंडो, so b cube minus 2a cube upon b cube plus 2a cube is equal to 71 upon 179। आंसर देख रहे भाई? क्या आंसर है पहले बोलो? पहले वाले का 2 और इसका 6। हाँ
हाँ 2 और 6 पर Some typical type of component or dividend questions. These questions are very important because in examination such type of questions will be 100% asked. 100%. This is square, this is square root. They can ask you a cube question, they can ask you any type of question, but you have to understand, looking at the question you see that there is a plus sign in the numerator and minus sign in the denominator. That means you have to use componendo dividendo. Here also see this question, there is a plus sign, there is a minus sign. Here you have to use componendo dividendo. अगर यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, क्यूब रहेगा, सेम कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो. अरे समझ में आ रहा है? क्वेश्चन चेक करना, प्लस माइनस कॉम्पोनेंट डिविडेंडो, प्लस माइनस कॉम्पोनेंट डिविडेंडो. अरे बराबर है क्या? सो आई विल राइट बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो. आई विल राइट बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो. बराबर? क्लियर? नाउ 17 प्लस 8, 17 माइनस 8. ये साइड तो इजी है, बट ये साइड में थोड़ा नंबर्स बड़ा है. तो चलो we will put in bracket 2x, very good, 2x plus 1 the whole square plus 2x minus 1 the whole square plus 2x plus 1 the whole square minus 2x minus 1 the whole square. अरे बराबर है? upon same but minus sign, same but minus sign, numerator and denominator. बराबर? So I will get 2x plus 1 the whole square plus 2x minus 1 the whole square, 2x plus 1 the whole square, 2x minus 1 the whole square. Okay? Now open the brackets. I will get 2x plus 1 the whole square plus 2x minus 1 the whole square plus 2x plus 1 the whole square minus 2x minus 1 the whole square upon 2x plus 1 the whole square plus 2x minus 1 the whole square minus 2x plus 1 the whole square and plus 2x minus 1 the whole square is equal to 25 upon 9. समझा कि क्या किया? ये प्लस है ना, तो ये साइन प्लस और इसका माइनस ही रहेगा. ये माइनस है तो इसका माइनस हो गया और इसका प्लस हो गया. बराबर है? ठाक 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 ठाक. क्या बचेगा ऊपर? 2x plus 1 the whole square, 2x minus 1 the whole square, 25 upon 9. 2 gets cancel, taking square root 2x plus 1 the whole square upon 2x minus 1 the whole square is 25 upon 9, taking square root. I'll get 2x plus 1 upon 2x minus 1. I will write 5 upon 3. I am not writing the negative value, I am writing only the positive value, that is 5 upon 3. अरे बराबर है? So I will get cross multiply. I will get 3 2x plus 1 is equal to 5, 2x minus 1, 3 2s are 6, 3 1s are 3, 5 2s are 10, 5 1s are 5. So 6x minus 10x is equal to minus 5 minus 3. 6 minus 10 is minus 4x minus 8. X is equal to minus 8 upon minus 4. 4 1s are 4 2s are. X is equal to 2. Clear? Clear? Next, same type. Component dividend, same type. 4 plus 1. ये इजी है, बट ये साइड का थोड़ा बड़ा है, तो ब्रैकेट डाल दो प्लस प्लस ब्रैकेट ब्रैकेट माइनस माइनस न्यूमू डिन्नू बोलो न्यूमरेटर क्या है? 4x plus 1 x plus 3 4x plus 1 x plus 3 very good 4x plus 1 x plus 3 4x plus 1 x plus 3 open the brackets 4x plus 1 plus root x plus 3 plus root 4x plus 1 minus root x plus 3 plus root 4x plus 1 plus root x plus 3 minus root 4x plus 1 plus root x plus 3 is equal to 5 upon 3. ठाक 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 ठाक. बराबर? क्या बचेगा? 4x plus 1 2x plus 3 is equal to 5 upon 3. 2 gets cancelled.
स्क्वायर रूट है ना, इधर स्क्वायर था, टेकिंग स्क्वायर रूट, इधर स्क्वायर रूट है, स्क्वेयरिंग साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वेयरिंग Both the sides. both sides. I will get 4x plus 1, x plus 3, 25 upon 9, khachak khachak, 9 4 20, sorry 9, 4x plus 1 is equal to 25, x plus 3, 9 4s are 36, 9 1s are 9, 25x plus 75, 36x minus 25x is equal to 75 minus 9, 36 minus 25 is 11x is equal to 66, x is equal to 6. Is it clear? Yes.